Good morning, dear students. Welcome to the English Canvas. Today we are going to explore a bold and symbolic poem by the great Irish poet W.B. Yeats titled Leda and the Swan. This poem is not just about a myth, it's about violence, divine intervention, fate, and the beginning of something as massive as the Trojan War. So let's dive deep and unfold each layers of meaning line by line like we always do. If you found this session helpful, please do like, share and subscribe to the channel. Let's begin the class. So before we begin the class, let's talk about the background of the poem. Leda and the Swan is a remarkable sonnet by William Butler Yeats, first published in 1924 in the collection called The Tower. तो ये कलेक्शन है द टावर, उसी का ही एक पोएम है ये. सो द पोएम ड्रॉज इट सब्जेक्ट मैटर फ्रॉम द ग्रीक माइथोलॉजी, retelling the myth of Zeus. Zeus is the supreme god in Greek mythology. It is also known as Jupiter. So it's a retelling myth of Zeus or Jupiter seducing or raping Leda, the queen of Sparta. ये जो Leda है, she was the queen of Sparta in the form of a swan. तो Jupiter जो है, Zeus जो है basically, ये स्वान क्या डिस्गाइज करके क्वीन ऑफ स्पार्टा इनकी लीडा को सिड्यूस करते हैं. एंड दिस मोमेंट बोथ वायलेंट एंड डिवाइन is presented as a metaphor for historical cycles and the intersection of myth, fate, power and sexuality. अगर हम बात करें इसके क्लासिकल कॉन्टेक्स्ट की, तो पहले समझना पड़ेगा कि वो है क्या. ग्रीक माइथोलॉजी में Zeus transformed himself into a swan and descended upon Leda, who was either bathing or walking around a river bank, right? So that night she has also slept with her human husband. Leda का जो कि क्वीन ऑफ ये क्वीन ऑफ स्पार्टा थी, इसके जो हस्बैंड थे वो किंग ऑफ स्पार्टा जिनका नाम था टिंडेरियस. तो दैट नाइट शी ऑल्सो स्लेप्ट विद हर ह्यूमन हस्बैंड Tindarius, which led to the miraculous birth of 2 eggs, from which emerged 4 children. तो उस दिन इन्होंने इनके 4 बच्चे हुए थे, 2 एग्स हुए थे बेसिकली. उस 2 एग में इनके 4 बच्चे थे जिसके नाम है, मैं ये इरेज कर देती हूँ, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए. तो इस लीडा के 4 बच्चे हुए थे. हेलेन, ये हेलेन ऑफ ट्रॉय है जिनकी वजह से ट्रोजन वॉर हुआ था जो काफ़ी 10 साल तक चला था, जो काफ़ी फेमस है. और क्लाइटेमनेस्ट्रा, ये भी इनका एक बच्चा था. कैस्टर और पोलक्स. सो इन चारों बच्चों में से हेलेन्स बर्थ बिकम्स द टर्निंग पॉइंट, और यही बहुत इम्पॉर्टेंट है. शी वुड ग्रो अप टू बिकम द मोस्ट ब्यूटिफुल वुमन इन द वर्ल्ड, and her abduction by Paris would ignite the Trojan War. Thus, Yeats present the rape or Yeats represents the rape of Leda as the symbolic conception of future tragedy. It's a pivotal event that leads to the fall of Troy and in Yeats' imagination, the eventual collapse of classical civilization. So, if we talk about the poem, so Yeats wrote this poem during a period of spiritual and historical reflection. तो ये जो पोएम है ये स्पिरिचुअल और हिस्टोरिकल रिफ्लेक्शन को रिप्रेजेंट करता है. एंड दिस पोएम इज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस थियोरी ऑफ हिस्टोरिकल साइकिल्स, and this detailed in his philosophical work A Vision, which was published in 1925. So according to Yeats, हिस्ट्री मूव्स इन जायर्स. जायर्स हमने कल भी डिस्कस किया था, जिसका मतलब होता है स्पाइरल मोमेंट्स. एंड ईच मेजर इवेंट इन द ह्यूमन टाइमलाइन सिग्नल्स अ शिफ्ट बिटवीन 2 epochs or phases of civilization. So the theme of the poem, the rape of the Leda, is thus not just a mythological tale, but also it becomes a metaphysical metaphor for violent historical change,
जस्ट एज द यूनियन ऑफ गॉड एंड मॉर्टल. देखिए, स्वान जो है वो है जियस, जो कि इमॉर्टल है, ठीक है, और लीडा जो है वो तो इंसान है, वो मॉर्टल है. सो दिस union, the seduction, or we can say the rape, is a union of god and a mortal in ancient times. पहले के टाइम में, एंशियंट टाइम में हुआ था. दैट ट्रिगर्स द फॉल ऑफ ट्रॉय. और इसी सिडक्शन के बाद ही हेलेन का बर्थ होता है. तो हेलेन ही वजह बनती है उस ग्रेट ट्रोजन वॉर की. ऐसा माना जाता है कि इंडिया में महाभारत का वॉर, और ग्रीस में ट्रोजन वॉर, दोनों का लेवल बिल्कुल सेम है. तो ऐसा माना जा सकता है कि हेलेन वॉज द रियल रीज़न टू फॉर दिस फॉर दिस for this fall of Troy. Yet believe that modern such a world, जैसे कि मॉडर्न एरा में हुआ था ना वर्ल्ड वॉर 1 और द इरिश सिविल वॉर, तो वो इसी तरह का वॉर बता रहे हैं इसको, ट्रोजन वॉर को. दैट इंडिकेटेड अ सिमिलर डिस्ट्रक्शन रीबर्थ ऑफ द वर्ल्ड. अगर हम पोएम के स्टाइल की बात करें तो मैंने आपको शायद पहले वाली क्लासेस में बताया था कि सोनेट्स भी दो टाइप के हैं. द फर्स्ट वन इज पेट्रार्कन, और जो दूसरा है वो है शेक्सपियरियन. तो ये जो सोनेट है ये पेट्रार्कन है. पेट्रार्कन सोनेट्स है. सोनेट में बेसिकली 14 लाइन्स होती है, जैसे कि इसमें भी है 4 + 4 8 और 3 + 3 6. तो 14 लाइन का ये सोनेट है. एंड दिस पोएम इज अ पेट्रार्कन सोनेट बट विथ हार्श jarring language full of violent physical physical imagery, unlike the traditional romantic sonnets, right? And this one shocks the reader. It is both erotic bhi hai ye, and it is also brutal. So it is both erotic and brutal, making us question the morality of divine power and its influence on human destiny. So W.B. Yeats blurs the boundary between consent and violation, divinity and savagery, which makes a poem highly controversial, intense and thought provoking even today, right? तो चलिए पोएम को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और समझते हैं. A sudden blow, the great wings beating still. So W.B. Yeats begins with a jarring, violent image. A sudden blow suggests an unexpected assault. The great wings beating still. It means it conveys the powerful motion of the swan's wings during the attack. The juxtaposition of sudden, this, and still, this one, gives a sense of confusion and chaos, setting a tone of violence and helplessness. The swan is not just a bird but also a symbol of Zeus, god Zeus, the supreme god of Greek, Zeus, who has descended in this form to overpower Leda. Above the staggering girl, her thighs caressed. So the swan is flying above Leda, who is overwhelmed and losing balance. So the phrase staggering, this phrase, her thighs caressed. So this phrase, her thighs caressed, is both sensual and sinister. It indicates Zeus' physical approach, but this term is ironic, and it tried to soften the violence of the act but actually intensifies its brutality. By the dark web, her nape caught in his bill. Dark web, this word, dark web, it refers to swan's feet. Swan के जो feet होते हैं वो dark होते हैं. So the dark webs refers to the swan's feet, symbolizing entrapment and control. And the phrase her nape caught in his bill, it means, it shows the swan clutching the back of her neck, an image often associated with the domination in the animal world, right? And this line further evokes the power of and imbalance and intensifies the imagery of assault, right? He holds her helpless breast
upon his breast. It means the swan pressed her chest against his. That symbolizes both intimacy and force submission. The alliteration of holds her helpless, that holds her helpless breast, enhances the sense of vulnerability, and lack of consent. So, W.B. Yeats combines divine and human imagery to blur the lines between myth, passion, and violence. Now, the next stanza is: how can those terrified vogue fingers push? This is a rhetorical question, and this reflects the helplessness of Leda. Terrified vogue fingers. This phrase symbolizes her panic and lack of control. The question implies futility. How can she possibly fight back against a god? This is a question here. Her actions are instinctive and unfocused, showing her complete disempowerment, right? The feathered glory from her loosening thighs. The feathered glory. It refers to the majestic divine form of the swan. Feathered glory. Divine form is Yeats. The phrase her loosening thighs, it suggests forced sexual submission. There is a deep contradiction here. Divine the glory is a juxtaposed with brutal violation, and this question deepens the deep disturbing nature of the act, right? And how can body laid in that white rush? So laid in the white rush, this phrase has a dual meaning. It refers both to physical laying down and a rush of feathers and motion. And this white symbolizes both purity and violence. Violence masked in beauty. वाइट जो है वो दो चीज़ों को सिंबलाइज कर रहा है यहाँ पर. पहला तो है प्योरिटी और दूसरा है वॉयलेंस मास्क इन ब्यूटी. एंड द बॉडी इज ओवरवेल्ड powerless in the face of divine power, right? But feel the strange heart beating where it lies. The word strange shows the unnatural, otherworldly nature of this interaction. Leda feels the heart of Zeus beating in the swan, right? मतलब उसको सुनाई दे रही है हार्ट बीटिंग इन द फॉर्म ऑफ इन द स्वान. जो जीएस की जो हार्ट बीटिंग है वो स्वान में वो सुन पा रही है, ठीक है, सब समझ पा रही, फील कर पा रही है. एंड दिस सजेस्ट बोथ लाइफ एंड इन्वेजन. So this line captures the eerie intimacy of the scene and how deeply it affects Leda emotionally and physically. Right now, the third stanza is: a shudder in the lines engendered there. So this is a direct reference to conception. The shudder in the lions नहीं है ये लॉइन है. लॉइन का बेसिकली मतलब होता है पीस ऑफ मीट फ्रॉम द एनिमल्स लोअर बैक और साइड नियर इट्स टेल, राइट? So the shudder in the loins is both a physical reaction and a metaphor for the moment of historical consequence. So Leda conceives here. Whom? Leda conceives Helen of Troy, who will later cause the Trojan War, and the violence gives birth to history. तो ये जो violence हुआ है seducing का, रेप का, ये violence ही तो है. तो इस violence ने क्या किया है? इस violence ने हिस्ट्री को बर्थ किया है. सो इसी प्रोसेस में लीडा कंसीव्स हेलेन of Troy, who will later cause the Trojan War. So here we can see that we can assume that the violence gives birth to history. The broken wall, the burning roof, the tower. So Yeats connect the moment of violation to the destruction of Troy कि इसी violence की वजह से
ये रेप हुआ है, इसी वॉयलेंस की वजह से ट्रॉय का डिस्ट्रक्शन हुआ है. एंड दीज इमेजेस, ब्रोकन वॉल and burning roof and tower, that evoke war, fire, and collapse. This implies the personal trauma. The personal trauma is Leda's rape, lead to political catastrophe, that is Trojan War. So ये जो पर्सनल ट्रॉमा है ये लीडा का रेप है, और ये पर्सनल पॉलिटिकल जो कैटेस्ट्रॉफ है ये ट्रोजन वॉर है, राइट. एंड द सो एंड एगेमेम्नोन डेड. ये जो कैरेक्टर है ये ग्रीक कैरेक्टर है, एक हिस्टोरिकल कैरेक्टर है. ये जो मैंने आपको बताया था ना कि 4 बच्चे होते हैं, हेलेन, क्लेटेमनेस्ट्रा, ये इसका हस्बैंड है. मतलब हेलेन की जो बहन है ये पर्सन, ये इसका हस्बैंड है, राइट. So this line, the Agamemnon dead, a direct consequence of Helen's birth is the war and eventually the murder of Agamemnon, a Greek king, by his wife Clytemnestra, Helen's sister. मैंने आपको बताया ना यहाँ पर ये. So Yeats traces a chain of historical and mythological disasters to this single act of divine violence. Being so caught up, it means Leda is not just physically caught or held, she is also emotionally and spiritually trapped. This phrase also hints that she might be mentally disoriented, overwhelmed by something beyond human experience, divine violence. It reflects passivity and perhaps trauma, where the victim can't comprehend and or respond meaningfully to what is happening, right? So mastered by the brute blood of the air. So mastered का यहाँ पर मतलब है completely overpowered or dominated. Brute blood of the air. This phrase refers to the swan, which is who is Zeus in disguise, representing animalistic power and divine force combined. This line tells us that Leda was totally overwhelmed by Zeus' violent, godlike energy, and she didn't stand a chance emotionally or physically. So Yeats is describing rape here in mythological terms, but also hinting at a large symbolic loss of human autonomy in the face of fate or history, right? Now the next line is, did she put on his knowledge with his power? So this is the central philosophical questions of the poem. Put on, here she put on, here means acquire or becomes imbued with. So Yeats is asking, is that moment of divine assault, did Leda receive some part of Zeus divine understanding along with his strength? मतलब क्वेश्चन ये है कि जब ये हो रहा था, ये रेप हो रहा था, सेड्यूसिंग हो रही थी, या हम कहें कि जब ये डिवाइन असॉल्ट हो रहा था, तब क्या लीडा के पास भी कोई डिवाइन अंडरस्टैंडिंग आई? मतलब डिड शी पुट ऑन हिज नॉलेज विद हिज पावर? तो मतलब जब ये प्रोसेस हुआ तो क्या जीएस की डिवाइन अंडरस्टैंडिंग अलॉन्ग विथ हिज स्ट्रेंथ भी उसको मिली क्या? इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट वॉज शी सिंपली अ विक्टिम, और डिड दैट कॉन्टैक्ट विद द डिवाइन लीव हर अनचेंज इन अ डीपर पॉसिबल मिस्टिकल और विजनरी वे? तो मतलब ये सिर्फ एक सिंपल वो विक्टिम ही बनी इस प्रोसेस के बाद, वो सिर्फ एक विक्टिम ही बनी, या उसके अंदर भी कोई चेंज आया? क्योंकि उसका मतलब एक रिलेशन तो बना ही है ना डिवाइन गॉड के साथ, तो उसके अंदर भी कुछ डिविनिटी आई, या बस एक नॉर्मल वो विक्टिम ही रह गई? So it's a deeper or possible mystical or visionary way to think something like that. It brings up the idea that the great violence might awaken knowledge. This is a metaphor for how trauma or transformation, especially historical and political, can bring about sudden insight or awakening. Now the last line of the poem is, before the indifferent beak could let her drop, and this is the question as well. So the swan's beak here represents Zeus' divine persona and calling it indifferent, indifferent beak. So this is a key. After the act, the swan lets her fall,
emotionally cold, without empathy, just another moment in a god's journey, but a life altering event of Leda could let her drop. It means it's almost violent in its casualness, emphasizing the callous detachment of divine or powerful beings toward mortal lives. And this line mirrors the way history, fate, power often act on individual without concern for their suffering, right? And these lines are deeply tragic and thought-provoking. Yeats is using the mythological rape of Leda as a metaphor for the way power violates innocence. The moment of historical transformation, like Leda's rape led to Helen's birth, and Helen's birth led to Trojan War, and Trojan War led to fall of empires. So the possibility that in experiencing trauma one may gain insight or knowledge, but at what cost, right? And the final question, the final question is intentionally left unanswered, making us reflect कि लीडा को भी क्या कोई कुछ मिला फ्रॉम दिस हॉरर इंसिडेंट, मतलब उसके पास भी कोई डिविनिटी आई या नहीं आई. और द सेकेंड क्वेश्चन इज सफरिंग जस्ट सफरिंग और डज इट रिवील सम ट्रूथ और डिवाइन नॉलेज. एंड द थर्ड क्वेश्चन इज, आर गॉड्स who are basically say system of power ever capable of compassion, or are they always indifferent, right? सो ये हमने लाइन बाय लाइन डिस्कशन कर लिया है. अब थोड़ा थीम्स को देखते हैं. So the first theme is violence and power. The entire poem revolves around power imbalance, that is divine versus human, male versus female. This act is non-consensual, consent तो सिर्फ था ही नहीं, and it raises a question about nature of divine justice. The second theme is history and destiny. वन मोमेंट दैट चेंजेस द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, जैसे कि ये सिडक्शन हुआ या कहे ब्रुटैलिटी हुई, रेप हुआ, इससे हेलेन का बर्थ हुआ, हेलेन की बर्थ की वजह से ट्रोजन वॉर हुआ, ट्रोजन वॉर की वजह से फॉल ऑफ ट्रॉय हुआ. सो इट एक्सप्लोर्स हाउ वायलेंस इज डीपली एम्बेडेड इन द बिगनिंग्स ऑफ ग्रेट सिविलाइजेशन. थर्ड थीम इज sexuality and consent. So the act is portrayed with sensual imagery, and yet it's disturbing. Yeats mixes eroticism and horror, a style that forces readers to confront moral ambiguity. Knowledge and power. यहाँ पर यही क्वेश्चन पूछा गया है कि does suffering bring some wisdom as well? Was Leda changed by this encounter in a way that made her see the future? सो दिस इज़ अ क्वेश्चन हेयर कि मतलब ब्रुटैलिटी तो हुई है, लेकिन इस ब्रुटैलिटी के बाद, क्योंकि ब्रुटैलिटी किसी आम इंसान ने तो की नहीं थी, ये एक डिवाइन पावर ने की थी, तो क्या उसको भी, जिसके साथ ये हुआ, क्या उसको भी कुछ ऐसा कोई पावर मिली दैट मेड हर सी द फ्यूचर और नॉट. ब्यूटी एंड ब्रुटैलिटी. द स्वान इज ग्रेसफुल, डिवाइन, येट कमिट्स अ मॉन्स्ट्रस एक्ट. स्वान जबकि एक गॉड है, ग्रीक गॉड है, सुप्रीम गॉड है, जियस. सो भगवान ऐसा काम करते हैं, तो ये ब्यूटी एंड ब्रुटैलिटी का थीम को रिप्रेजेंट करता है कि स्वान जो है, क्योंकि जब भगवान स्वान की फॉर्म में आते हैं तो बेसिकली इट इज़ फुल ऑफ ग्रेसफुलनेस, it's divine, but still it commits a monstrous act, and this contrast creates the emotional tension of the poem, right? अब यहाँ पे सिम्बल्स की बात करें तो देखिए 3 कैरेक्टर्स हैं यहाँ पर पोएम में. एक तो है लीडा, लीडा खुद द विक्टिम. सो बेसिकली लीडा represents humanity, मदरहुड ऑफ फेट, फेट की तो मदरहुड है ही, वर्नरेबिलिटी, ठीक है. स्वान इज जियस, इट सिम्बलाइजेज पावर, डिविनिटी एंड वायलेंस. हेलेन जिसका बर्थ हुआ वो भी इसका ये कैरेक्टर इस पोएम का. सो शी सिम्बलाइजेज ब्यूटी दैट कॉजेज डिस्ट्रैक्शन. एंड द फेदर विंग्स, yes, the feathered glory, the feather wings, it symbolizes sensuality, grace, which hides danger.
So, yet Yeats shows that how historical change often begins with violence. He also explores the paradox of divine beauty committing human horror, and the poem Leda and the Swan is a bridge between myth and more modern consciousness. It tells us power, whether divine or political, is rare, innocent. So, Leda and the Swan is more than a retelling of a myth. It's a bold, challenging, uncomfortable look at how beauty and mortality often go hand in hand. Yet, doesn't give answers. He leaves us with questions. देखो ना, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा. So he leaves us with questions. Was Leda empowered or she destroyed? Was history shaped by divine design or violent chaos? So, this poem demands not just understanding but reflection, right? So, that's all about this poem. In our next session, we will take another poem of W.B. Yeats, and today we explored this poem that emerges myth with meaning, power with vulnerability, and fate with beauty. Through Yeats' masterful sonnet, we uncover the deeper layers of violence, consent, prophecy, and transformation, wrapped in a brief but intense moment of divine encounter. Each line of this poem revealed the tension between physical domination and symbolic rebirth, between historical consequences and spiritual transcends. As we close today's session, remember that Yeats doesn't just narrate a myth. He challenges us to think about how power shapes history, how fate is entangled with desire, and how mythology still speaks to the modern world. Right? In our next class, we will move from mythological violence to spiritual rebirth as we read and analyze the Eastern 1916, another powerful poem by Yeats that explores nationalism, transformation, and the cost of change. Till then, stay curious, stay poetic, and see you in the next session. Thank you.